स्वाद परमंश परिव्राजकाचार्य सुतर सदस्यमान भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तिवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड की जय। वृंदावन धाम की जय। नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। नववेद भक्तवृंद की जय। All glory to the Asmi. All glory to the Asmi. All glory to the Asmi. Thank you very much. The following is a class on the Srimad Bhagavatam, 6th canto, 1st chapter, text number 50, given by His Divine Grace, A.C Bhaktivedanta Swami Prabhupada, recorded on the 3rd of August, 1975, in Detroit, Michigan. The mind is the 16th item, and above the mind, the soul is the 17th item. He is the living being, therefore he is one only. In cooperation with the other 15 items, along with the mind, the living entity is enjoying the material world alone. The instruments are the 5 sense organs, the 5 working organs, the 5 objects of the senses. Thus the mind is 16, and the living entity himself is 17. In this way, the living entity is enjoying different situations of 3 types, namely happiness, distress, or a mixture of both. Panchabhi kurute sharthan, panchavedat panchabhi, ekastu sarasena trin sayang saptu dasosmate. So, we are fallen into great ocean of omniscience, covered. First of all, the 5 senses, knowledge, acquiring senses, Gyanendriya and Karmendriya, working senses, 10 and sense object. We have got eyes, therefore eyes are engaged for seeing something beautiful. Roop, Ras means taste. That is the business of the tongue. And to see beautiful things, that is the business of the eyes. Roop, Ras, Shabda. Shabda means sound. The ear, we have got ear, we want to hear nice songs, music, radio, television. So the ear is there, the objects are there. Roop, Ras, Shabda, Gandha, smelling. There is good odor also, bad odor also. Roop, Ras, Gandha, Shabda, Sparsha. In this way, we are entangled, completely under the laws of material nature. I am the spirit soul, Saptadasha. I have given my power of attorney to the mind, and mind is creating different varieties of the Shabda Sparsha, Roop, Ras, Gandha, Shabda, Sparsha. In this way, life after life, as it is explained in the previous verse, Jathagnyas tamasa upasti bhaktam eva hi
Naveda purva aparam nasta janma smitistatha. So, nasta janma, I do not know means I cannot remember what I did in my past life and what is going to happen in the next life. In ignorance. Tamasa, agga tamasa upaste. This is tamago. The present life as it is, we try to enjoy. That's all. Without caring for the next life or without understanding what was my past life. But human beings should be intelligent enough. You know, why I am enjoying, I am suffering, the other person, he is differently enjoying or suffering differently. Why the differences are there? This is intelligence. Why not one kind of enjoyment? Why not everyone millionaire? Why not everyone pauper or poor? There are varieties. They do not consider it. They are so full, they should. So why I am put into this condition, why he is put in the another condition, why the other is put in another condition. That is called tamasa. They do not care to know also. Tamasa. Tamasacha. This is not life. This is animal life. Therefore, Vedic injunction is, don't keep in this animal life. Tamasi ma, don't keep yourself in this darkness. Jyotirgama, come to the light. So, Jyotirgama means, that is tapasya. To come to the platform of light, it requires tapasya, austerity. That is required. The human life is meant for tapasya, to come to the light platform. Tapodibham, putrakajena suddheta satya. Tamasic or tamas or darkness means just like a person, he is attacked with tuberculosis, but he doesn't care about it. But intelligent man goes to the physician, asks that why I am suffering, what is the medicine. That is intelligence. So, human life begins when one is inquisitive to know why I am suffering. That is human life. And if he keeps himself in darkness, this is suffering, let me enjoy. Sometimes they want to forget the suffering by another suffering, drinking or LSD, to forget suffering. That is another suffering. Another suffering so much so that one becomes crazy and commits suicide. This is going on. A very precarious life, and human life is the only opportunity to rectify these mistakes and come to his original position, constitutional position, means the spiritual platform. Brahma bhuta prasannatma na sochati na kankati samas sarveshu bhuteshu madhbhakti lavati param. That is wanted. Brahma bhuta. As soon as one becomes Brahma bhuta, then immediately he becomes prasannatma, jubilant. Just like one is suffering from a disease, and somewhere or other, when he is relieved from that disease, immediately becomes jubilant. That is required. That is wanted. Brahma bhuta prasannatma. And when one becomes jubilant, then in that attitude one can enter into devotional service of the Lord.
not in the material condition which is always suffering. Dukkhalayam asasa. But we go on suffering just like animal. Animal is being taken to the slaughterhouse, still he is eating very jubilantly. Next item he will be killed. So this kind of consciousness is called animal consciousness. Jasyatu buddhi kunapeti dhaduki sadhik kalatrādishu bhaumo ijjadhi jatirtha buddhi salilena karhichit saeva gokhara. Like this Krishna consciousness movement means to deliver people from this ignorance platform and bring him to the light platform and knowledge platform so that one can understand what is his constitutional position, how he can stop the sufferings of life, and how one can become eternally blissful life of knowledge. Chaitanya Mahaprabhu, he has given us the Shikhasta, Chetadarpanamarjanam, by chanting the Hare Krishna mantra. The Bhagavad says tapasa. Tapasa means by undergoing severe austerities, penances. Tapasa brahmacharjena samena damena va. This is the instruction in the Shastra. One has to become perfect by tapasa, by austerities. Tapasa brahmacharjena, and becoming brahmachari, celibate. What is called? Celibate life? Celibacy, yes. Life of celibacy. Controlling the sex desire. This is tapasa. Tapasa brahmacharya, samena damena. These things are education. And what is this nonsense education? How to become a big mechanics of motor car parts. This is not education. This is Shudra education. It is not education, it is called Shilpo. Shilpo Vidya, Brahma Vidya. Vidya means Brahma Vidya. Therefore, in the Vedic society, education was meant for the Brahmins. Education was not meant for the Shudras. Education was meant for the Brahmins and partially of the Kshatriyas. Neither of the Vaishyas nor of the Shudras. What education? Vaishya's livelihood is, or his occupational duties, how to produce food, how to give protection to the cows, and if there is excess stock, how to trade with it. So anyone can learn by seeing only. It doesn't require any high education. If the father is tilling the field, the son can learn it by seeing it. The father, just like in Vrindavan, Krishna is going to tend the cows and calves of Nanda Maharaj. There is no education. It can be learned simply by seeing others doing that. So at the present moment, education means many Indians are coming to America to learn how to polish motor car parts or how to create technology. This is not education. This is not. But the Europeans and Americans, they are going to India for learning Brahma Vidya. That is education. The Europeans and Americans, when they go to Vrindavan
and Mayapur, they do not go there to see how we have manufactured cycle and machine for swing. They have seen enough of this. We may be very proud in India. Now we are manufacturing cycle and swing machine or some motor parts. Advanced. This is not advanced. Education means how to make one Brahman, how to teach him, how he becomes sense control, sama, dhamma, mind control, how to become truthful, how to become clean, how to become simple, how to become full of knowledge, how to apply knowledge in practical life, how to know God. This is education. This is education. So, the present situation of the human civilization is very, very dark, tamasa. They want to live in the city without working for producing their food, and there are butchers, they kill innocent animals, and in the city they eat the meat, and to digest they drink and work like hogs and dogs whole day and night. This is civilization. This is not civilization. This is darkness, darkness of life. So we are in the darkness of life at the present moment because it is Kali Yuga and the system is always there. So long the material world is there and the living entities are fallen in this material world, so they are implicated, more or less. So in the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga, they are not so implicated as they are implicated at this moment, Kali Yuga, because the age of misunderstanding and the duration of age is also very short. Prayano alpo ayusha. In this age, people are living not very long, although the limit is 100 years. Nobody is living 100 years. It is reduced, more and more. In the Kali Yuga, the memory will be reduced, the duration of life will be reduced, the strength of the body will be reduced, people's sense of mercifulness will be reduced. In this way, there are 8 items mentioned in the Srimad Bhagavatam. It will be reduced. So this is the age of Kali, and we are in darkness and mode of life just like animals. So this is our position, but the Supreme Personality of Godhead, Krishna, He is sympathetic, He comes. Therefore, He came in the Dwapar Yuga, by the end of Dwapar Yuga, and He left behind Him this Bhagavad Gita, being merciful upon this conditioned soul, that you make your life perfect by reading this Bhagavad Gita. I am leaving behind him. Arjuna is my friend. So, in the way of questions and answers, and in the way of Arjuna's falling in difficulty, Arjuna was not difficult. He is personal friend of Krishna. But in order to derive the instruction of Bhagavad Gita, he showed himself as in ignorance. The benefit is ours that we have got this Bhagavad Gita. But still, we are so fallen because Krishna said that Sarva Dharman Parityajya Mamekam Saranam Bhaja. Therefore, people misunderstood. Again Krishna came in this Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu. Krishnaya Krishna Chaitanya Nami. The Rupa Goswami, he prayed Sri Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadannaya. Krishna came
That's all right. But he was not so liberal. He wanted first of all surrender. Sarvadharman parityajya mamekam saranam bhaja. Aham tva sarva pape bhavamokkhaisya. Krishna made condition. Krishna is personal, supreme personality of Godhead himself. He came to show his mercy, and therefore he left Bhagavad Gita to be read by any common man can understand. But the rascals are so rigid that they will misinterpret. Krishna left it for reading it by everyone, any common man can understand. Dharma khetri kurukhetri samaveta judasava. This is the beginning. Any common man can understand that Kurukshetra is still there, and it is Dharma Khetra. Still people go there to take bath in the Brahma Kunda during lunar and solar eclipse. It is a great Dharma Khetra, but they will interpret Dharma Khetra, Kurukshetra means this body. Where they get this meaning? Where is the dictionary? No. Because he is scholar, he has invented some meaning. This is going on, and people are misled. So the time is very, very bad, and even there is attempt to deliver them. They are so rigid and so stubborn, dog obstinacy. They want to remain in the doggish condition of life. It is very, very difficult. But Chaitanya Mahaprabhu is so kind. Krishna said in the Bhagavad Gita, Manusyanam sahasreshu kaschid jatati siddha. Jatatam api siddhyanam kaschid vetimam tattat. To understand Krishna is not so easy thing. Manusyanam sahasreshu, after many, many millions of persons, one tries to become siddha. Siddha means to understand what he is. Gyan, that is Brahma Bhuta Prasanna. And Jatatamapi Siddhana, just like there are two classes of transcendentalists, the Mayavadi and the Vaishnava. That is all over the world. The Mayavadi, they are supposed to be Siddhas. They are not Siddha, but they are trying to become Siddha, to understand the spiritual position. Neti, neti, I am not this, I am not this, I am not this. But they are not Siddhas. Siddhas, when they will understand that Vasudeva Sarvamiti, Sa Mahatma Sudullava. When they will understand Krishna, the Krishna is everything. Sa Mahatma, that Mahatma, not this ordinary Mahatma. Narayan, Namo Narayan. He is ordinary. Sa Mahasudullava, very rare Mahatma. Who is? Vasudeva Sarvamiti. Sa Mahatma, Vasudeva, Krishna is everything. That is Siddha. Siddha. And again, Jatatama Visiddhyanam Kaschid Vettimam Tata. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu is very kind that without considering whether he is a Siddha or a Viddha or anything else, let them take Krishna Prema. Therefore Rupa Goswami prayed to Chaitanya Mahaprabhu, Namo Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratise Namaha. He understood that here is Krishna, but he has come now in the most liberal way. Everyone is giving Krishna prayer. How? Chant Hare Krishna, dance, and become a lover of Krishna. So nice. Simply by chanting and dancing, one is becoming practical. It is all these boys and girls, 4 or 5 years ago, they did not know who is Krishna. That is surprising to everyone. The whole world is praising this movement because they see practically that how these European, American boys and girls are so much absorbed in the thought of Krishna. That is Chaitanya Mahaprabhu's gift.
Namo Mahavadhanaya Krishna Prema Pradaya. Krishnaya Krishna Chaitanya Namne. It's a very simple thing. Don't think I have played something wonder. No, it is not my wonder. The process is wonderful. The process itself, you have to simply accept, then your life will be successful. But it is not that Bhaktivedanta Swami has brought this. They say, they give me the credit, that is my good fortune also. But actually, I am just like a peon, I am brought. But I am delivering it without any adulteration. That may be my credit. And if you take it without any adulteration and practice it, then your life is successful. This is the secret of success. Chant, dance, take prasadam, live very happily, and look very brilliant, and next life, go to home, back to garden. So kindly, I am very pleased that you are doing nicely, but don't be proud. Always remain humble, make that I am nothing, I cannot, that will be nice. And if you think, now I have become liberated, I can chant and dance, no, don't think that. That's why even Chaitanya Charitamrita author, he says, Purisher ki thaite moise lagist. I am lower than the worm in the stool. Jagai madhai hoite moise papist. I am more sinner than Jagai madhai. In this way, that is not artificial. A Vaishnava must think like that I am rotten, I have no value. Don't be proud. Then the things will go on nicely. And as soon as you become proud, then Maya, yes, you are God, come on. I will kick you on your face. Come on. These rascals becomes God, and the Maya kicks on the face, and they think that they have become God. Don't become like that. Always remain humble servant and you will be happy. Thank you very much. हरे कृष्णा। तो आज हम सुन रहे थे श्रील प्रभुपाद से स्कंद 6 अध्याय 1 श्लोक 50। ये श्लोक के ऊपर हमने क्लास सुना। तो शुरू में प्रभुपाद कह रहे थे कि किस प्रकार से ये जो अलग अलग जीव है इस दुनिया में एक प्रकार से बंधे गए हैं, तो उसको कैसे समझाया प्रभुपाद ने, हाउ दे आर एंटेंगल्ड इन द वर्ल्ड। Ashish. Prabhupada said in beginning that there are 5 senses, 5 sense organs, 5 sense objects, and 5 different, like 15 he calculated and said that like for every 5 sense organs there are 5 sense objects, Sabda, Sparsha, Rupa, Rasa, Gandha, and in whole these things, this living entity is entangled in ignorance. Like that he has explained. So प्रभुपाद बता रहे थे कि कैसे ये जो मन है, तो मन को हमने पूरा ये हमारा जो पावर ऑफ अटॉर्नी तो उसको दे दिया, और वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध इनके मार्फत क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार से अनुभव दे रहा है, हमको एक प्रकार से बद्ध अवस्था में रख रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा दैट इज़ हाउ वी आर एंटेंगल्ड कम्प्लीटली अंडर द लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। हरि बोल। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि ये जो नष्ट जन, मतलब मुझे मालूम नहीं है या मुझे पिछले जन्म का याद नहीं आ रहा है, ये प्रभुपाद ने कहा क्या है, ये तमोगुण, तमसा, इसका ये एक प्रकार से लक्षण है। तो मनुष्य जन्म मिला है वो किसके लिए है, कौन कौन से प्रश्न मनुष्य जन्म में पूछना चाहिए। Yes, Trivikram Chandra.
श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि क्योंकि मनुष्य जन्म मिला है तो हमें ये पूछना चाहिए कि मतलब पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ कैसे हम जान सकते हैं, ये पूछना चाहिए कि सबको अलग अलग लेवल ऑफ एन्जॉयमेंट और लेवल ऑफ सफरिंग क्यों है। मतलब मुझे सबको सेम क्यों नहीं है, सब मिलियनर क्यों नहीं है या सब पॉपर क्यों नहीं है, तो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। ये इंटेलिजेंस हमारा होगा कि अगर हम ये सवाल पूछते हैं। अगर एनिमल है तो एनिमल ये सवाल नहीं पूछेगा, बट ह्यूमन है तो प्रभुपाद बोले तमसी माम ज्योतिर्गमय हो, कि लाइट के तरफ जाना है तो वी शुड आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि व्हाई एम आई सफरिंग एंड व्हाई इज देयर डिफरेंस इन द लेवल ऑफ हैप्पीनेस एंड एंजॉयमेंट। हरि बोल। तो अभी तमस ये अवस्था में है, तो इससे ऊपर उठना है तो क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन दिया है भागवतम में? यस, अब आई गोइंग। प्रभुपाद कह रहे थे जिस तरह ट्यूबरक्यूलोसिस वाला जो व्यक्ति है उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वैसे हमने इसके ऊपर उठने के लिए तमोसो मा ज्योतिर्गमय, उसके लिए तपस्या करना चाहिए। हरि बोल। हाँ, तो प्रभुपाद ने ये उदाहरण भी दिया था कि जो जिस प्रकार से एक रोग हो जाता है व्यक्ति को तो उससे ऊपर उठता है, तो वैसे ही तपस्या हमारे लिए है। प्रभुपाद ने फिर कहा लेकिन जो ये नहीं करते उनका अवस्था क्या है, और प्रभुपाद ने एक उदाहरण भी दिया कि इस दुनिया में किस प्रकार से एक प्रकार से उसको कहते, प्रभुपाद कहते दे आर इन प्रिकैरियस कंडीशन, बहुत दुखित अवस्था में है। तो कौन सी अवस्था है और क्या होता है? ओके, महत सेवा प्रभु। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि उनको पता ही नहीं कि वो क्यों सफ़र कर रहे, तो उससे बाहर निकल के लिए वो फिर अल्कोहल का या कुछ ड्रिंकिंग और कुछ ड्रग्स का वगैरह सहारा लेते हैं और तमस में मतलब और फॉलन हो जाते हैं, फिर ऐसे ही उसमें वो एंटेंगल हो जाते हैं। प्रभुपाद ने कहा टू फॉरगेट वन सफरिंग, क्या करते हो? और दूसरा सफरिंग, हाँ, they take another suffering. So Prabhupada was saying that because they are suffering, they take another suffering of LSD, drinking, और फिर इससे क्या होता है? They become so much crazy, तो बहुत एक प्रकार से पागल जैसे होते हैं और आखिरी में they commit suicide, तो वो क्या है आखिरी में सुसाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या है जीवात्मा की बद्ध अवस्था इधर है। हरि बोल। और फिर प्रभुपाद ने एक श्लोक बताया ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, तो उसमें प्रभुपाद ने कहा कि किस प्रकार से ये एनिमल कॉन्शियसनेस, जो जानवर है उनकी चेतना क्या है, कैसे रहती है, और वो मनुष्य के जीवन में कैसे दिखती है। ओके, माता जी को कृष्णा। जानवर ये नहीं सोचते कि कल क्या है, वो सिर्फ खाते पीते हैं और सोते हैं और आराम करते हैं। और वो अगर स्लॉटर हाउस में जाना है तो भी उनको ये चिंता नहीं है कि हम आगे स्लॉटर हाउस में जाने वाले हैं, वो आराम से खाते हैं, कल क्या चिंता नहीं कि आगे हमें मार के खाया जाएगा। हाँ, मतलब वो अगर कत्तल खाने में भी है तो उधर भी क्या है बहुत आनंद से खा रहे, प्रभुपाद कह रहे, लेकिन उनको मालूम नहीं अगला उनका ही नंबर है। तो इस प्रकार से क्या है इस दुनिया में भी यही प्रकृति है कि वो नहीं सोचते आगे क्या होना है, खाओ पियो और मजा करो, ऐसा सोचते हैं। यस, तो क्या है उनको मालूम ही नहीं कि क्या है ये मृत्यु भी आने वाला है, तो इससे क्या है हमको गंभीर होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा इस प्रकार से क्या है ये मनुष्य अपना एनिमल कॉन्शियसनेस इस जीवन में रहता है। हरि बोल। तो दो प्रकार के विद्या प्रभुपाद ने कहा, वो कौन से है और उसमें से सही विद्या क्या है। ओके, माता जी।
शिल्प विद्या और ब्रह्म विद्या। तो शिल्प विद्या की जो शूद्र की विद्या है कि कैसे फार्मिंग करनी है, जैसे ब्रह्म विद्या की जो ब्राह्मणों की विद्या है, दैट इज द प्रॉपर एजुकेशन। हाँ, तो शिल्प विद्या मतलब कुछ स्किल्स है जो अलग अलग शूद्र है, और ब्रह्म विद्या तो दोनों में से उच्च कौन सा है? ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या। हरि बोल। और ये जो शिक्षण रहता था वो किसके लिए था और किसके लिए नहीं था? यस आयुष। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद कह रहे थे कि ये जो शिक्षण है ये ब्राह्मण और थोड़ा बहुत क्षत्रिय के लिए है, बाकी वैश्यास एंड शूद्रास के लिए एजुकेशन नहीं था। ये जो एजुकेशन है ब्राह्मण विद्या। हाँ, तो क्यों नहीं था बता सकते हैं? Why it was only for Brahman, for others? Because जो वैश्य और शूद्र जो काम करते हैं वो कोई भी देख के सीख सकता है, तो उसके लिए ऐसे कुछ अलग से विद्या की जरूरत नहीं। करेक्ट। प्रभुपाद कह रहे थे क्या है, जो वैश्य का जीवन है वो क्या है, कोई भी उसको देख के सीख सकता है कि किस प्रकार से गायों का रक्षण करना चाहिए, किस प्रकार से अन्न एक प्रकार से खेती करना चाहिए, किस प्रकार से बिजनेस करना है, ये कोई भी देख के सीख सकता है। लेकिन ये विद्या जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों को दिया है कि नहीं? इस प्रकार। हरि बोल। प्रभुपाद ने फिर 8 चीज़ें कहा शिक्षा मतलब क्या है, तो आप जितना बता सकते हैं, शायद एक दो भी बता सकते हैं। सो व्हाट ऑल डिफरेंट एजुकेशन मीन्स व्हाट? ओके, माता जी का। Education means how to become Brahmana, strength control, truthful, sama, क्या था और? 3 हो गया और 5 बाकी है। Simple, full of knowledge. ओके, 5 और क्या था? And apply that knowledge in practical life. ओके, 6 2 और बाकी। एनीवन? ओके, अजित माधव प्रो। Hare Krishna. So it was to mind control is another one, or remain clean. हाँ, वो 2 हो गए थे प्रभु जी। लाइक एक तो है प्रभुपाद ने कहा हाउ टू बिकम ब्राह्मणा। हाँ, ब्राह्मणा, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, then remain clean, knowledge, and then that's it. How to know God. That is also one type of education. And वो बताया था how to apply knowledge in practical life. तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने ये 8 चीज़ें कहा जो शिक्षण करना चाहिए, है कि नहीं? हरि बोल। ओके, कलयुग के लक्षण क्या क्या है? What are symptoms? ओके, गंगा प्रसाद। प्रभुपाद ने बोला कि 8 चीज़ें हैं टोटल जो कि रिड्यूस होती है कलयुग में, लेकिन उसमें से आई थिंक 4 बताए प्रभुपाद ने। तो फर्स्ट इज द जो मेमोरी है वो कम होती है, सेकंड इज बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती है, थर्ड जो है वो लाइफ स्पैन कम होता है, एंड फोर्थ इज जो मर्सीफुलनेस है दैट आल्सो रिड्यूसेस। हरि बोल। और फिर प्रभुपाद ने कहा लेकिन इस कलयुग में क्या है, कृष्ण आए हैं और द्वापर युग में कृष्ण आके उन्होंने किस प्रकार से कृपा दिखाई। हाउ कृष्णा इज मर्सीफुल, कैसे समझाया प्रभुपाद ने? हाउ कृष्णा इज मर्सीफुल। ठीक है, अजित माधव। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद ने बताया कि कृष्ण जब गए द्वापर युग में आए और उन्होंने हमें भगवत गीता दिया अर्जुन के माध्यम से। सो दैट वाज द कंपैशन ऑफ कृष्ण फॉर अस। द कन्वर्सेशन विच he had with Arjun. The question and answers in form of question answer, that's a guiding light for us. That's a compassion of Krishna.
हरि बोल। और प्रभुपाद ने भी बताया कि सिर्फ हमको सिखाने के लिए क्या किया कि उन्होंने अर्जुन को एक प्रकार से बाह्य दृष्टि से तमोगुण में रखकर हमारा जो अवस्था है वो बताया और फिर इस प्रकार से भगवद गीता दिया। ओके, तो इस दुनिया में जो लोग हैं प्रभुपाद कहे बट द फॉल्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड, तो ये जो लोग हैं इस दुनिया में उनका एक गलती है। क्या गलती करते हैं? इतना कृपा दिखाने बाद भी प्रभुपाद कहे दे मेक वन फॉल्ट। व्हाट इज द फॉल्ट? यस करण ब्रो। They are misleading the meaning of that Bhagavad Gita. क्या कहते हैं वो? Prabhupada told that Dharma Kshetra Kurukshetra, so they mislead as it is a body. So like that they mislead, and Prabhupada told don't know from where they are bringing these meanings. Which dictionary they are referring to? प्रभुपाद कहते कुरुक्षेत्र है और लोग भी जाते हैं जब लूनार इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स है, उधर ब्रह्मकुंड में नहाने के लिए जाते हैं, लेकिन ये लोग क्या कहते हैं? कुरुक्षेत्र मतलब ये शरीर है। तो इस प्रकार से क्या है, ये लोगों की क्या है, गलत धारणा है। हरि बोल। ओके, तो प्रभुपाद ने कहा कि दो प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं जो एक प्रकार से सिद्ध बनना चाहते हैं। तो वो कौन है और उसमें से सही सिद्ध कौन बनता है या कौन सही महात्मा है, एक श्लोक भरकर प्रभुपाद ने इसको बताया। ओके, यस माता जी। प्रभुपाद ने श्लोक कोट किया, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानां कश्चित् वेत्ति माम तत्वतः। सो जो मायावादीज होते हैं वो बोलते हैं नैति नैति, मीन्स हम ये नहीं है, हम वो नहीं हैं, और वो खुद को सिद्ध बोलते हैं, बट दे आर नॉट रियली सिद्धास। और दूसरा कैटेगरी, हु इज अनदर कैटेगरी हु इज ट्राइंग टू बिकम सिद्ध? आई डोंट रिमेम्बर रियली व्हाट। ओके, तुकाराम ब्रो। हरे कृष्णा, दूसरा कैटेगरी है वैष्णवा, जो समझते कि वासुदेवम सर्वमिति। हाँ, तो दूसरा कैटेगरी कौन है? वैष्णव है क्या? और वो किस प्रकार से समझते हैं? वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ क्या है, कृष्णा इज एवरीथिंग। और इस प्रकार से वो क्या होते, वो महात्मा, सिद्ध महात्मा बनते हैं। और इसमें से दोनों में से प्रभुपाद ने कहा द वैष्णवास आर द रियल महात्मा। हरि बोल। अभी इसको समझाते हुए प्रभुपाद ने कहा चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से भी दयालु है। तो कैसे समझाया? हाउ कृष्णा इज काइंड मोर, सॉरी, चैतन्य महाप्रभु इज मोर काइंड देन कृष्णा। ओके, सुकुमार गौरम। चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, सो प्रभुपाद बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु गेव कृष्ण प्रेम विदाउट थिंकिंग वेदर वन इज सिद्ध और नॉट। सो इसलिए वो भगवान कृष्ण से भी ज़्यादा मर्सीफुल है। प्रभुपाद ने कहा वेदर दे आर सिद्ध विद्ध और एनीथिंग एल्स, क्या है, लेट देम टेक कृष्ण प्रेम। तो ये रूप क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज मोर मर्सीफुल देन कृष्णा। हरि बोल। और फिर प्रभुपाद बता रहे थे किस प्रकार से वो पाश्चात्य देश में आके प्रचार किए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि, या इस प्रकार से पूछता हूँ, किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद का एक प्रकार से नम्रता इधर दिखता है? हाउ डू वी सी द ह्यूमिलिटी ऑफ श्रील प्रभुपाद इन होल वादिरास्ते? So Prabhupada was saying that everybody is giving me credit that Bhaktivedanta Swami has come and done a miracle. But he was just saying that I am just a peon, I am delivering a message. If there is some credit, it is because I am giving the message without any adulteration. And he was welcoming everyone. You please come, practice,
then perfect your life. हाँ, तो प्रभुपाद का किस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं मैं एक जैसे पियून जैसा था, मेरा तो कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा हरि बोल। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि जो भक्त है उसका किस प्रकार से भाव रहना चाहिए भक्ति का पालन करते हुए, और एक उदाहरण भी दिया प्रभुपाद ने। सो लास्ट क्वेश्चन, ओके, रामानंद प्रभुपाद ने कहा कि हमें नम्र रहना है और क्या नहीं रहना है, प्राउड नहीं होना है। हाँ, प्राउड नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट। नम्र रहना है मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि मैं महान हूँ या फिर मैं लिबरेट हो गया। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का उदाहरण दिया कि कैसे वो कहते थे कि पूरी शरीर कीटे हुए थे मुझे से पापिष्ट। तो वैष्णव को ऐसा सोचना है कि मैं रॉटन हूँ और प्राउड नहीं होना है। प्राउड होंगे तो फिर माई विल किक ऑन द फेस, यू आर गॉड कम आई विल किक। यस, तो प्रभुपाद कह रहे थे पहला तो हमको क्या है, वी डोंट हैव टू बी प्राउड, हमने गर्व नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद कहे ऑलवेज रिमेन मीक एंड हम्बल, तो हमेशा नम्र रहो। और क्या सोचना है, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर कि हमको किस प्रकार से रहना है कि सोचना है आई एम लोअर, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं आई एम लोअर देन वर्म इन द स्टूल। फिर आई एम सीनर देन मोर सीनर देन जगाई मदाई। और प्रभुपाद फिर आगे बता रहे थे कि क्या है कि आई एम रॉटन एंड नो वैल्यू। तो इस प्रकार से क्या है, गर्व नहीं होना है और नम्र रहना है। और फिर प्रभुपाद कह रहे थे क्या है कि जब इस प्रकार से रहेंगे देन व्हाट विल हैपन, प्रभुपाद कहते देन यू विल बी ऑलवेज हैप्पी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने कहा हरि बोल, जय प्रभुपादा, जय प्रभुपादा, प्रभुपादा जय प्रभुपादा। जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय प्रभुपाद। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।